Hello class, how are you? I hope you all are good. Today we'll start with a new chapter that is transportation trivia. So, what is in this chapter? We'll study about the different types of transport we use, we take in our day-to-day lives. So, when we go to school or when you come to school, so which vehicle do you use or which type of transport you prefer? Yeah, you come by road transport. So there are so many vehicles which moves on road, like some came from rickshaw, some came from auto rickshaw, some came from the scooty, bike, car. So there are so many types of vehicles which moves on road transport. So there are so many other means of transport which we have already read in our last classes. So in this class, we'll discuss animals as means of transport in olden days when there were animals, so people used to go from place to place with the help of animals. Modern means of transport that might be roadways, railways, waterways and airways. Paying for travel, so travel करने के लिए आपको पे करना होता है, which cards you use, tokens, cash payments, right? So air tickets, visa, so all this we'll learn in this chapter. Get ready, you have to take the means of transport you have used. इनमें से कौन कौन से transport में आप अभी तक जा चुके हैं, so you have to take accordingly. Now let's just start the chapter. The early humans used to travel by foot when there was no concept of wheel, when there were no transport, no vehicles. So people used to move or walk for long distances. That is, they used to travel by foot. They used to carry loads on their backs. अपनी बैग्स पे इतना कैरी करके लोड एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. Then they tamed animals. फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को टेम करना शुरू किया ट्रैवलिंग के लिए, लोड्स उठवाने के लिए. The invention of wheel brought about a revolution in the field of transport. लेकिन व्हील की इन्वेंशन से ही रेवोल्यूशन आ गया मार्केट में. ट्रांसपोर्ट के फील्ड में धीरे धीरे उन्होंने व्हील से बुलक कार्ट बनाई, अलग अलग तरह की कार्ट्स बनाई, टांगा बनाया, टू व्हीलर्स बनाया, फिर फोर व्हीलर्स बनाए, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स. धीरे धीरे और इन्वेंशंस होती गई. वुडन की बजाय और मटेरियल्स यूज होने लगे. टायर्स बनाए बसेस के, ट्रक्स के, एलॉय व्हील्स यूज करे, रबड़ का मटेरियल यूज करा, फिर एरोप्लेन के व्हील्स. सो मच ऑफ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिला. सो टुडे वी हैव वेरी फास्ट मूविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज की डेट में हमारे पास फास्ट मूविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है. सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक इफ यू हैव टू गो टू योर रिलेटिव्स place who lives in another town, or you can say another city, another state. So which mode you consider before you go? First of all, you think about the time. How much time do you have to reach there? Then you think about the budget also. It should be pocket friendly to you. So you consider these things before you plan your trip, whether you'll go by road, you go by rail, or you go by air. Because air is the fastest means of transport, so it is expensive but time saving. And if we go to the same route, same distance by road, it will take time but comparatively वो cheaper होगा. So suppose हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है? If we'll go by train, it might take 1.5 or 2 days, right? But it will be cheaper. But going to Mumbai from Delhi by air will take only 2 to 3 hours, but it will be expensive comparatively. So this way we decide कि हमारा time budget कितना है, उस हिसाब से हम अपना way of transport choose करते हैं. Now animals as means of transport. Animals that carry passengers and goods उन्हें बोलते हैं beast of burden. Camels, elephants, donkeys, ponies, ये कुछ important beast of burden है. You can see in the picture as well. Bullock are used to pull bullock carts. Bullock कहाँ use होती हैं? Bullock cart pull करने के लिए. Some carts जो कि 2 wheel होती हैं, कुछ 4 wheel होती हैं. Bullocks are used to pull carts since ancient times. पुराने टाइम से ही यूज हो रही हैं in many parts of the world. Camels are used for transport in desert. Desert में यूज होता है क्योंकि it can withstand the heat. वो इतनी heat सह सकता है and stay without food and water for many days. That you very well know. They are the sheep of the desert.
Then are the elephants which transport the logs. You can see बड़ी बड़ी लक्कड़s को वो किस तरीके से अपने ट्रंक में ले जाता है, कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह. Then you see the donkeys. Donkeys are used to carry the loads again villages में, लेकिन hilly areas में you can see mules and ponies and yaks are used to carry the loads. Okay. Now the dog, reindeers are used to pull sledges, that is carts with wheels. Carts without wheels, जिसमें wheels नहीं होते, sledges में move करते हैं. As you have seen the Santa coming in his sledge, जिसे reindeer pull करते हैं. तो जो उसकी कार्ट होती है उसमें व्हील्स नहीं होते, इस तरीके से स्लेजेस होते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, देयर आर नो व्हील्स, जस्ट द स्लेजेस, और उसके ऊपर कार्ट है. राइट. नाउ dogs and reindeers are used to pull sledges, the carts without wheels in places where the land is covered mostly with ice and snow. Land नहीं होता लेकिन ice और snow होती है. Wheel इसलिए use नहीं होता क्योंकि वो ice में sink हो जाएगा. Modern means of transport that have made the world a global village. इन्होंने पूरी दुनिया को एक global village बना दिया है, globalize कर दिया है. Today a quick trip in an aeroplane can move us from one kind of landscape to another in a few hours. मतलब एक लैंडस्केप से हम दूसरी जगह, like landscape we are living in the plains area, we need to move in some mountains region, so within an hour or two we can reach in a new landscape. So transport ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया है. The modern means of transport को हम 4 modes में divide करेंगे: road, rail, water and airways. First of all, we read about the roadways. Roadways are the most convenient mode of transport. They help people and goods to be taken right up to their doorsteps, कि हम उसे doorsteps तक ले जाएं. इंडिया के पास गुड नेटवर्क है रोड्स का. NH44 जो है लॉन्गेस्ट, NH मीन्स नेशनल हाईवे, जो एक सिटी को दूसरे से कनेक्ट करता है. So NH44 is the longest highway in India. It runs over how much kilometer? 4112 from Srinagar to Kanyakumari. That is, if I roughly draw the India map, this is your Kashmir and this is the southernmost point, Kanyakumari. So ये जो distance है, this is your NH44, nearly 4000 kilometer it covers, a single road. So there is also a golden quadrilateral जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों सिटी को कनेक्ट करता है. So this is the golden quadrilateral, India's biggest highway project है. At present अभी ये under construction है. Okay. Now you can see in the picture how national highway looks. We study about railway. So what is it, children? This is the Delhi metro. So you must have visited in this metro. So railways are the most popular mode of transport in India. Trains carry millions of passengers, tons of heavy goods from one part of the country to another. एक जगह से दूसरी जगह. तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी फास्ट मूविंग मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है. कुछ ऐसी ट्रेन जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस हो गई, तेजस हो गई, शताब्दी हो गई, जो कि बहुत ही हाई स्पीड में चलती है एक कंट्री से दूसरी जगह हमें जहां सामान को या लोगों को पहुंचाना होता है. They run at a speed of over 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 100 से ज्यादा स्पीड पे चलती है. बिग सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, इनके पास अपनी लोकल ट्रेन्स हैं. These trains run within the cities, जो कि सिर्फ उसी सिटी में रन कर रही है. दिल्ली की ट्रेन दिल्ली में ही रन कर रही है. ओके. कोलकाता, दिल्ली, मुंबई हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम जिसे मेट्रो कहते हैं. सो यू कैन सी इन द पिक्चर. तो मेट्रो हमें ओवर द ब्रिज भी दिखती है, ऑन द रोड भी हो गई, और अंडर द रोड भी, दैट इज अंडरग्राउंड भी हमें देखने को मिलती है. तो कहाँ कहाँ पे है? कोलकाता, दिल्ली और मुंबई. सबसे पहले कोलकाता में बनी थी. नाउ इन हिली एरियाज कुछ ऐसी छोटी ट्रेन जिसे कि हम टॉय ट्रेन भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर. दे रन ऑन नैरो ट्रैक्स, इनके छोटे ट्रैक्स होते हैं जिसपे रन करती है. यू कैन सी सच ट्रेन इन शिमला, सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग. यहाँ पे ये ट्रेन देखने को मिलती है. द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज बिल्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1853. It was merely a 34 kilometers track between Mumbai and Thane. Today's India has the largest in Asia and fourth largest railway network in the world. आज की डेट में तो इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे एशिया में अगर हम देखें.
एशिया कॉन्टिनेंट में, बट इन द वर्ल्ड इफ वी कंसिडर इट इज एट 4th नंबर. Its total rail track is more than 80,000 rail tracks हैं and about 11,000 run every day in India. So now we'll study the waterways. They are slowest means of transport when compared to others, but they are cheapest also. So they are the cheapest and slowest. Ship, boats, ferries, steamers, ये सब मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है, वो व्हीकल्स जो पानी पे मूव करते हैं. ओके. इन इंडिया ओनली 3 रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड हुगली आर नेविगेबल, जिसपे हम मूव कर सकते हैं. Lagoons of Kerala are also suitable for water transport. India has a very long coastline. Coastline means वो area जो water body को touch करता है. As I have drawn this India map, I'm drawing again. So you can see this area. Okay. This area is basically the coastline. यहाँ पे सारा पानी है. Okay. So this is your coastline. So India has a long coastline जहाँ पे 12 major ports हैं. As I already told you, ports क्या होते हैं? जैसे एरोप्लेन्स के लिए एयरपोर्ट होते हैं, ऐसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए पोर्ट्स होते हैं. इनके कोस्ट लाइन पे ऐसे 12 मेजर पोर्ट्स हैं जहाँ पे शिप्स आके लोड अनलोड होती है. पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं शिप को. सो it has 12 major ports. Ships carry passengers and heavy goods to different countries. इन ports के थ्रू इनके साथ जो दूसरी countries होती है वहां से पानी के थ्रू यहाँ पे आके शिप रुकती है. लोग फिर वापस इंडिया आ जाते हैं और जिनको इंडिया से बाहर जाना है वो जा सकते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जिनके कुछ नाम है: कांडला, मुंबई, कोची, पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता. मुंबई जो है सबसे ज्यादा बिगेस्ट और बिजिएस्ट है, बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है उस जगह में. Now we study airways. Aeroplanes are the fastest means of transport. Aeroplanes and helicopters are very useful during flights. Floods वगैरह के समय जब कोई फेमाइंस आ जाता है, जैसे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, उस समय एयर ट्रांसपोर्ट बहुत यूज में आता है. तो वहाँ पे ये फूड को ड्रॉप करते हैं पैकेट से, मेडिसिन, क्लोथ्स विक्टिम्स को. Aeroplanes are also used to carry fruits, fish, flowers. कुछ ऐसी आइटम्स जो पेरिशेबल होती हैं, जो कि जल्दी ही खराब हो जाती हैं, कुछ एडिबल ऐसी चीजें, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाने के लिए, कुछ ऐसे खास फ्रूट्स हो गए, या किसी सिटी में फेस्टिवल है तो उन्होंने बाहर से, जैसे दिल्ली में फेस्टिवल है या अभी अयोध्या का भी है इनॉग्रेशन, तो व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर इम्पोर्टिंग द फ्लावर्स फ्रॉम अदर सिटी. लाइक कोलकाता से फ्लावर्स आ रहे हैं दिल्ली. ठीक है. तो इस तरीके से जहाँ पे इनॉग्रेशन है वहां पे भी अदर सिटी से वो लोग फ्लावर्स मंगवा रहे हैं. तो वो फ्लावर्स अगर और किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो इट मे टेक टाइम, और बाय द टाइम फ्लावर्स जो हैं क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, उसकी स्मेल खराब हो सकती है, फ्रेगनेंस. सो दिस वे फ्रूट्स, फिश एंड फ्लावर्स एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिसे हमें जल्दी मेडिसिन मंगवानी है किसी की जान बचाने के लिए, तो उस समय हम एरोप्लेन्स का यूज कर सकते हैं. ऑल दिस आइटम्स गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली. इंडिया हैज मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑल्सो. कैन यू सी द लिस्ट हेयर? इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली में है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इट्स इन कैलकाटा. And this is the picture of Indira Gandhi International Airport, New Delhi. Such an amazing airport. Chhatrapati Shivaji in Mumbai, Guru Ramdas in Amritsar, Rajiv Gandhi in Hyderabad, and Annadurai in Chennai. So these are some important airports. Now you have to think and discuss. You have to organize a classroom debate on a transportation related to topics such as is पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर होता है प्राइवेट से, इसके बारे में आप सोचेंगे एंड विल कीप योर आर्ग्यू पॉइंट्स फॉर द डिबेट. ओके. नाउ पेइंग फॉर ट्रेवल. पीपल ऑफन ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरियस पर्पसेस के लिए, सो दे नीड टू बाय टिकट्स फॉर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ऑफ कोर्स, जैसे इवन आप अपने प्राइवेट में भी जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी में फ्यूल रिफिल कराते हैं. अगर हम पब्लिक से जा रहे हैं तो वी नीड टू पे देम फॉर द टिकट्स. Let us learn how people pay for their travel. Before that, choose some quick response. Elephants are used to carry logs in deserts or forest. Elephants in forest. Yaks carry people and loads in plain areas or hilly areas. Yaks are found in hilly areas. Reindeer for sledges or tangas. For sledges, of course.
नाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, ट्रेन, टैक्सी हो गई, शिप, एरोप्लेन, ये सारे ही क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट? If we want to use any of these transport, we have to buy ticket or pay some money for traveling. Here you can see this is the Indian rail ticket. For traveling by train हम टिकट बाय करते हैं टिकट काउंटर से रेलवे स्टेशन पे जाके, राइट? We can also buy railway tickets, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं हम क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू. इसे हम बोलते हैं ई टिकटिंग. So many people prefer this. With a click of button they buy the ticket for the place they need to go. When we travel by metro train, हम tokens लेते हैं. These days paper tokens are there, or you can book your ticket from WhatsApp also, or you could use your metro card, okay, that Paytm e-transit wallet you can use, जिसे आप refill कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही UPI से. So regular passengers जो हैं smart cards use करते हैं. दे पुट द कार्ड एट द सेंसिंग डिवाइस. जब वो एंट्री एग्जिट करते हैं गेट से तो जो भी उनका फेयर होता है उस राइड का वो डिडक्ट हो जाता है. इफ दे आर यूजिंग द टोकन और द पेपर स्लिप्स दे कैन स्कैन द QR कोड प्रिंटेड ओवर इट, और इफ दे आर यूजिंग सम स्मार्ट कार्ड दे कैन शो, they can use it on the sensing device while entering or exit the gate so that the amount or the fare could deduct from the card. We need a passenger if we want to go to a foreign country. अब अगर हमें बाहर जाना है, foreign country means India is a country, country से अगर हमें बाहर जाना है उसके लिए हमें चाहिए होगा ये पासपोर्ट जो कि हमें गवर्नमेंट इशू करती है. So the foreign visit is also approved by government, वो भी गवर्नमेंट ही अप्रूव करती है. Okay, if you are eligible, if you haven't done any crime, so you can visit other country. So this is known as visa जब गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है. So we sometime you must have heard कि पासपोर्ट पे हम बोलते हैं कि वीजा लगा या नहीं, हमें US जाना है या हमें तो वीजा लगवाना है, right? So you must have such sort of things near around. Now let us recall the four major modes of transport are roadways, railways, waterways and airways. NH44 is the longest highway in India. Okay. Railways are the most popular modes of transport in India. Waterways are slowest but cheapest, and the airways are the fastest but comparatively expensive. Conceptual assessment. India has a good network of roads. Yes. Toy trains are popular in deserts. False. They are popular in Shimla site, Siliguri or Darjeeling you have seen. Aeroplanes are the fastest means of transport. Yes, no doubt. The fastest railway line between Mumbai to Thane was built in 1853, 63 or 93. So it was in 53. In which city you have seen the toy train? Shimla, of course. Which Indian river is navigable? Tapi, Kosi or Ganga? So we have read Ganga and Brahmaputra. Those rivers were navigable. In which cities are the following airports located? Indira Gandhi International Airport. Yes, it is located in New Delhi. Chhatrapati Shivaji International Airport, that's in Mumbai. Then Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, yes, Kolkata. Annadurai International Airport is in Chennai. Now, how do these animals help in transportation? Horse. Horse क्या करता है? ये हमारे लिए loads carry करता है, right? So write down. A horse pulls. Basically ये टांगा pull करता है. Pulls a टांगा. Camel carry loads for us in desert. We'll write a camel carry loads in the desert. Okay. बुलक क्या करता है? कार्ट को पुल करता है, बुलक कार्ट को. We'll write a bullock pulls a bullock cart. एलिफेंट क्या करता है? ये फॉरेस्ट से जो हैवी लॉग्स होते हैं
उसको कैरी करता है. An elephant carries logs in the forest. Now donkeys, they also carry loads. So we'll write a donkey carries loads for us. Okay. So now answer the following questions. Which animals are called the beast of burden? The animals which carry loads for us or who work for us, like camel, bullock, elephant, donkey, mules, pony. So they all are the beast of burden. What are the four modes of transport? Yes, airways, waterways, roadways and railways. Now, why is road transport considered the most convenient? Road transport को इतना convenient हम क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमें door step तक पहुंचा देते हैं. Name the important ports all along the coast of India. We have seen there were 12 major ports. You have to name some important among those like Kandla, Kolkata, right? What are the advantages of air travel? Yes, they are fastest. We can reach in minimum time over the destination we want to reach. और इसके अलावा कुछ पेरिशेबल आइटम्स भी हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं. फिश हो गई, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गई या फिर कोई emergency life saving drugs हो गई. Now, competency based assessment, you have to collect some recycled materials such as bottle caps, cardboards, and straws. You have to make your own unique vehicles using these materials. Can you see in the picture? This activity will promote creativity and recycling awareness in you. Now you have to organize a role playing activity where you can take the roles of passengers and ticket agents. You can use a timetable to plan the journey, purchase ticket and act out the traveling scenario. So this way you can act for any of the port or any of the station or like on the railway counter or on the air ticket counter it happens. You can consider any scenario. What was the old names of the Chhatrapati Shivaji International Airport? Solve this puzzle and read the circle letters downward. You'll get some word over here. So solve this puzzle yourself. Now you have to design an eco-friendly green vehicles. As you can see in the picture. Then you have to discuss the features as power sources they use. Of course, they are eco-friendly. That is, they are not creating any air pollution. So means they are not using any gasoline. Like they are not using any petrol, diesel, CNG you can use, might they use CNG or they can use electricity. So they are not causing any pollution. They are energy efficient also. This activity promotes critical thinking and sustainable transportation solution. These days we are switching to because we know by the time or in coming 20 to 30 years petrol or gasoline will end up. So there are other sources, sustainable solutions we are finding for our vehicles nowadays. You have to create a collage using the pictures of vehicles from magazines. Differentiate between the vehicles that contribute to pollution जैसे कि older cars हो गई and those that are environmental friendly, bicycles हो गई, electric cars हो गई, EVs which are on hit these days, electric vehicles. So there are electric pump stations also for them to get charged. So you have to discuss this. Value corner, if you're traveling by train or bus, always hold the hand of an elder. एल्डर जो हैं हमारे साथ उनका हमेशा हाथ पकड़ के रखें. नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर से कुछ ना ले. बी केयरफुल while boarding the train or bus. You can see such a busy network of train is here. Busiest platform. So many people are trying to board the train or the bus. Do not stand at the doors or the footboard of the bus like this. So it could risk your life. So you should be cautious about this while traveling also. So class, with this we have done with the chapter. Meet you in the next class with new chapter. Till then, stay tuned.